हमें रोज़ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। सो इसलिए हमने एक सीरीज़ के साथ में स्टार्ट किया है। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी दैट वाज अबाउट योर इंग्लिश एग्जाम्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ रिफर टू दैट वीडियो। सो टुडे द थिंग विच वी गोना टॉक अबाउट इज द गैप ईयर। हाय, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू जीसी ग्लोबल एजुकेशन। सो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और बहुत सारे उसमें कंसर्न्स थे कि गैप ईयर के ऊपर हम एक वीडियो बनाएं। सो हियर वी आर। सो फर्स्टली व्हाट इज अ गैप ईयर? सो बहुत लेमैन टर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव डन योर एजुकेशन, बीट योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स और योर 12th स्टैंडर्ड, और उसके बाद में लाइक यू वर सिटिंग आइडल, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई कोर्स परस्यू नहीं किया, आप कहीं वर्क नहीं कर रहे थे। सो दैट पीरियड इज नोन एज गैप ईयर। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव ग्रेजुएटेड ऑफ in year 2016 and till 2019 you were just sitting idle, you were not doing anything, you were not pursuing any course like I said. So that 2016 to 2019 will be your 3 years of gap years. So that is what gap year is. The other thing is, if you're working, then we do not consider those things as a gap year because you were engaged in some sort of activities. So the first thing which we will talk about, इफ़ यू आर सिटिंग आइडल। सो अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद में, मास्टर्स के बाद में अगर आपने कुछ नहीं किया है, बट अगर आपके पास में उसका जेन्युइन रीज़न है, लाइक एनी काइंड ऑफ फैमिली इमरजेंसी और आपकी खुद की कोई मेडिकल इमरजेंसी, और इट कैन बी एनीथिंग, अगर हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं देन इट वुड बी गुड। बट वाई वी नीड टू जस्टिफाई दैट? Because when you sit idle for a very long time, then we have to justify university and the visa officer. Why? Because for university, because they want the best students for their classes. So that's why we need to justify your gap year to the university. Why the visa officer? Because we want to make sure that your immigration purpose is only for your education and not for settling abroad, because those are very crucial things which we need to be very mindful of. So that's why आपके gap years को हमें justify करना होता है if you are sitting idle. The other thing is, if you are working, then we have no problem with that. So even if you are working, let's say for 8 years, 9 years or 10 years, then it shouldn't be a problem, because then we can justify that year with your work experience, and all we would need your appointment letter or your recent salary slips, and those things would be very good to go. Because recently we had someone who was 43 of age and we were able to help that person get his visa on time. So this was pretty much about the gap thing, and I hope it cleared a little bit doubt of yours. And if you have more questions, you can always reach out to us and book your free counseling today. So all the best for all the students who are planning abroad, and follow us for more information.